चलो, firstly let's try to revise the postulates beta. First one is postulates of KTG. इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसमें पूछे, वी से दैट मॉलिक्यूल साइज जो अपन कंसीडर करते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स साइज negligible. Size of the molecules are what right now for me? Negligible. And molecule is assumed to be in hard sphere beta, and all the collisions in this one are right now for me elastic. All collisions are elastic. Okay, and molecules are hard. Molecules are hard. Sphere ले सकते हैं, hard sphere के हिसाब से, ठीक है ना. And there is no interaction among the molecules beta. There is no interaction among molecules. And total energy will be equal to how much in this one beta? Sum of your kinetic energy plus potential energy. As interaction energy नहीं रहने की वजह से potential energy कितनी बन जाएगी? Zero. Very important beta. Total energy इसके अंदर जो बनेगी, total energy is equals to, it is the combination of kinetic energy plus potential energy. इंटरैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगी, तो टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ओनली. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है ना. एंड कोलिजन टाइम क्या होता है बेटा? बहुत ही नेग्लिजिबल. कोलिजन टाइम इज नेग्लिजिबल. ये पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, ऑलरेडी वीकेंड्स में भी आपको पूछते रहते हो, ग्रैंड टेस्ट वगैरह में भी पूछते रहते हैं बेसिकली. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स बेटा? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है थियोरेटिकली. effect of gravity on molecules, वो छोटे रहने की वजह से ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल होगा, और आई कैन से दैट इट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है ना. और नेक्स्ट वन इज इन दिस वन, रियल गैसेस obeys ideal gas laws. Obeys your ideal gas laws. Ideal gas law. What is that an ideal gas law? PV is equals to nRT. PV is equals to nRT at what temperature? At very high temperature and low pressure. Very low pressure बोल सकते, very high temperature and very high T is your temperature. These are the theoretical points you need to remember, ठीक है ना. और थोड़े कन्वर्शन फैक्टर्स है, बट एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आई होप यू नो दिस वन, बट स्टिल भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ तो आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम लोग के लिए क्लैरिटी हो जाएगी व्हाइल डूइंग प्रॉब्लम्स. एट एसटीपी कभी भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये वाला मतलब प्रेशर कभी भी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? 1 एटमॉस्फेयर लेंगे, एंड टेम्परेचर लेंगे हम लोग 273 केल्विन, ठीक है ना. तो PV इज इक्वल्स टू nRT के अंदर जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स मान के चलिए 1 है, R की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.314. टेम्परेचर इज 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर. प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर यानी 1.013 into 10 to the power of 5 पास्कल. अप्रोक्सीमेटली ये अपन लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 into 10 to the power of 5 पास्कल. कभी कभी कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली 10 to the power of 5 पास्कल ले लेते हैं. अगर ये हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दिस वैल्यू विल कम आउट फॉर मी 2.24 into 10 to the power of -2 meter cube. This value very famously we write it as 22.4 liters. याद है आप लोगों को, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं. V is equals to 22.4 liters. Yeah, it is 2.24 into 10 to the power of -2 meter cube. Am I clear with this one? Am I clear? Am I clear with this one, beta? Check.
पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर जो नोटेशन होता है, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, देख लीजिए। पी क्या होता है बेटा? पी इज योर प्रेशर, वी इज योर वॉल्यूम, n is your number of moles, n is your number of moles, and r is your universal gas constant, universal gas constant, and t जो होता है temperature, t is your temperature। ठीक है ना? और थोड़ा डिटेल में लिख दूं मैं इसको, ये देखो थोड़े पॉइंट्स अपने को दिमाग में याद रखना है। n is nothing but of your molar amount of gas, molar mass of gas, यानी that is mass by molecular weight, or that is equals to n by n naught। n is number of molecules, n naught is Avogadro number, Avogadro number, n naught क्या होता है बेटा? Avogadro's number, Avogadro's number, which is a constant value याद है Avogadro's की 6.023 into 10 to the power of 23 molecules, 23 molecules per mole, very important बेटा। ठीक है ना? आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू होती है 8.31 जॉल पर मोल केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट से आपको याद रखना है एसआई सिस्टम में। या इसके और एक फेमस वैल्यू है, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, बाय डिफॉल्ट आप लोग याद रखना, अभी हम लोग डिराइव करते नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद है? डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू योर, कैसे निकालोगे बेटा? आर का PV is equals to n into R into T, यानी R is equals to PV by R is equals to PV by n into T। PV क्या होता है बेटा? वर्ग बोला था मैंने, डिवाइडेड बाय n मतलब किस में मेजर करोगे? मोल, टेम्परेचर मतलब केल्विन। वर्क का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t पावर -2, ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है? चलिए, और एक वेरी फेमस पॉइंट हम लोग याद रखना है, स्मॉल r मतलब क्या? Small r is known as of your specific gas constant, specific gas constant, यानी small r की वैल्यू होती है कैपिटल R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल r is equals to कैपिटल R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और वेरी फेमस यूनिट होती है और एक K is known as what बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन, ये बाय हार्ट होना चाहिए बेटा आप लोग को। इसकी वैल्यू होती है R बाई ओवर n नॉट, यानी एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.38 into 10 to the power of -23, and unit of this one is joule per Kelvin। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, आई होप यू कैन राइट दैट पार्ट। क्लियर है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। So m is the mass of the gas molecules, यहाँ पर अगर स्मॉल m ले रहे हैं वहां पर PV is equals to your nRT के अंदर राइट नाउ स्मॉल m आ रहा है तो दैट विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द गैस, कैपिटल M आ रहा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वो भी लिख देता हूँ एक बार, आप लोग फिर भी याद रख लीजिए। स्मॉल m कहीं पर आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। छोटे छोटे चीजें हैं जो बाद में आप लोग को कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ डिटेल में। कैपिटल M विल रिप्रेजेंट्स मी व्हाट बेटा? मास ऑफ गैस, डिफरेंस होता है ना मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल में और टोटल मास, मास ऑफ द गैस मतलब टोटल मास ऑफ द गैस। mw क्या होता है बेटा? mw इज योर मॉलिक्यूलर वेट, mw इज योर मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज n? I told you n is nothing but of your number of gas molecules, number of gas molecules। स्मॉल n क्या होता है बेटा? स्मॉल n is nothing but of your molecular density, molecular density, यानी n is equals to your n by v भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, isn't it? रो क्या होता है? रो इज नथिंग बट ऑफ योर गैस डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ योर गैस भी बोलो। सो डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू योर m into n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? So these are the some of the points which you need to carry always in your mind while doing the numericals related to your introduction of this part। I hope you are clear with this one। बेसिक है लेकिन याद रखना जरूरी है, रिकलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ इसके अंदर आता है अपने को, दैट इज अबाउट योर बॉयल्स लॉ। ओके,
So what is the Boyle's law beta? Boyle's law is very famous. I hope you remembered it. Temperature अगर अपना constant रखते हैं, we get relation right now. Volume is inversely proportional to the pressure. Yani from this one I can write PV is equals to your constant. Yani I can write here P1 V1 is equals to P2 V2. अगर वॉल्यूम ना देके लेंथ दे दिए तो आई कैन राइट P1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया into your length will be equal to L1 is equals to P2. Area of the tube will be same, length will be different. Area will get cancelled. So I can write in terms of length P1 L1 is equals to your P2 L2. Isn't it? Now area ना देके अगर radius में दिया तो P and V can also be written as, this can also be written as P1 into volume can be written as that is a solid sphere gas molecule 4 by 3 into R1 cube is equals to your P2 into 4 by 3 into your pi 2 into your cube. 4 by 3 gets cancelled. So it is a P1 R1 cube will also will be equal to P2 into R2 cube. जैसे गैस बबल एट द लेक वगैरह वाला का प्रॉब्लम होता है ना सरफेस टेंशन, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर हाउ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास बाय योर वॉल्यूम। एन क्या है देखो यहाँ पर, isn't it? और कैपिटल एम की वैल्यू क्या है, मास ऑफ द गैस, isn't it? मास ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, टोटल मास ऑफ द गैस मतलब m into n लिखोगे ना पर यूनिट वॉल्यूम, isn't it? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखो ये वाले में यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, m is equals to your n number of molecules, capital M is nothing but of your mass into your कितने वॉल्यूम रहेगा, टोटल वॉल्यूम पार्ट ऑपरेशन m into your n divided by your volume v, total number of molecules. So n by v क्या होता है बेटा, n होता है ना, तो n into your n। आ गई बात समझ में। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मतलब क्या, टोटल नंबर, n is the number of gas molecules into mass of each gas molecule, that will give me the total mass of the gas। क्लियर है, am I clear बेटा, am I clear फैजान हुसैन। चलिए वेरी गुड, ओके सो ये आ गया मेरे पास। अब इसके ग्राफ्स बताइए बेटा, वेरी फेमसली आपको दो तीन ग्राफ्स है इसके अंदर रफली। एक होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, वेरी फेमस, everyone I hope who has been preparing for the NEET might having an idea, this will be a rectangular hyperbola ऐसा। तो इसके अंदर मास कांस्टेंट होता है कभी भी और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो दैट विल बी द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन, अगर इफ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन PV प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्सेस योर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, एट टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, तो PV तो कांस्टेंट हो गया, तो इट विल बी अ कांस्टेंट पैरेलल टू योर y एक्सिस। अगर मैं ग्राफ ऐसा ड्रॉ करूं, यहाँ पर मैंने ले लिया PV और यहाँ पर ले रहा हूँ राइट नाउ फॉर मी प्रेशर, इन टर्म्स में भी अपने को स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इन दिस कंडीशन आल्सो टेम्परेचर इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1 by v लिख रहा हूँ वॉल्यूम, isn't it? So this will be equal to how much work? This one temperature will be constant and it will be a straight line passing from the origin. Very good option बेटा, वेरी फेमस है। आप लोग इसको किसी हाल में भी याद रखना है, इस चारों ग्राफ को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बार that is about your Charles law. Next one is about your Charles law। क्या होता है बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें, अगर कोई भी एक गैस है जैसे आइडियल गैस इज बीन kept at a constant pressure, volume of the gas will be directly proportional to its absolute temperature if mass and pressure are remaining constant, that is will be the relation। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ volume is directly proportional to temperature, यानी mass and pressure दोनों भी इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, constant, यानी volume is equals to K into T आ गया। This is the relation between V is equals to your K, isn't it? कहाँ से आया ये रिलेशन, PV is equals to NR into T में V is equals to NR divided by P into T, वो जो कांस्टेंट है ना ये वाला है, so PV is equals to K into T। so कांस्टेंट अगर कभी पूछ लिए तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, NR divided by P, ये लिखना है आपने। क्लियर है बेटा, am I clear with this one? तो अभी ग्राफ तो बहुत फेमसली आप लोग को मालूम होगा, if I am drawing a graph between volume versus your temperature taken in terms of a Kelvin, obviously it will be a straight line passing from the origin, and in this one what is remaining constant for me, pressure।
प्रेशर इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट। ये वाला हो गया एक ग्राफ। और एक ग्राफ आता है इसके अंदर, आई होप यू रिमेंबर इट, इफ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन v by t वर्सेस वॉल्यूम, so v by t always be constant ना बेटा, because pressure constant हो जाएगा इसके अंदर, so v by t is equals to constant। अगर मैं v by t versus, यहाँ पर फिर से और एक ग्राफ, v by t versus temperature in Kelvin ले लो, that will also be a straight line parallel to x-axis, so pressure is equals to constant, isn't it? Now this is something very important, ये generally बच्चे मिस कर जाते हैं। ये है ग्राफ between volume on your y-axis, but now if the temperature I'm taking in degree Celsius, that means T plus of your 273, isn't it? Then we'll be getting a straight line passing not from the origin, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, this will be the graph, so this will be equal to pressure is equals to your constant, this temperature will be minus 273 degree Celsius, तो यहाँ पर 0 degree Celsius, और यहाँ पर हम लोग लेंगे पूरा T degree Celsius के अंदर, so T degree Celsius, that will be more better, ठीक है ना? माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 273। On x-axis, I'm taking the temperature in degree Celsius। आगे बात क्लियर? चलिए अब ये ग्राफ बताइए, ये ग्राफ भी एज एन एमपी बाय केमिस्ट्री स्टूडेंट यू माइट हैव बीन गॉट इन वेरी मच आइडिया। वॉल्यूम वर्सेस अगर मैं 1/t लिख रहा हूँ, देन इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दो जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है बेटा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रीवियस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट। I give any option? सर हाँ बेटा, सर चार्ल्स लॉ का फर्स्ट ग्राफ मतलब ओरिजिन से पास नहीं होता ना सर? ऑरिजिन v is equals to kt है ना, y is equals to mx। फर्स्ट वाला ग्राफ सर मतलब ओरिजिन से नहीं होता, 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है ना? 0 केल्विन टेम्परेचर व्हाट आई एम टेकिंग राइट नाउ हियर, यहाँ पर तो केल्विन ही ले रहे हैं ना, तो प्रेशर विल बी अ कांस्टेंट, या डॉटेड लाइन से लिख लो, दैट विल बी मोर बेटर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इट विल बी अ ग्राफ लाइक दिस फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि v is equals to kt है ना बेटा, यस सर। y एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, स्लोप विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, m is equals to k, और x एक्सिस पे टेम्परेचर इन केल्विन, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम एन ऑरिजिन लाइक दिस। डन? यस सर। नेक्स्ट ये ल्यूकास लॉ, ये ल्यूकास लॉ, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, isn't it? According to it हम लोग क्या बोलेंगे, for any given mass of an ideal gas at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to the temperature। प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो P is equals to K into T। इसके लिए भी कैसे ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, so I can write here P1 by P2 will be equal to your T1 divided by T2। Done? So P by T is equals to constant, मतलब क्या लिखोगे बेटा, from PV is equals to nRT, PV is equals to nRT में से P by T will be equal to nR divided by V, so that is equals to constant। कभी कभी स्लोप पूछ लेगा, so this will be representing me what, a slope, straight line graph अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो basically, तो first वाला graph if I am drawing right now like this one is right now for me pressure versus temperature in Kelvin, then it will be a straight line passing like this as a dotted line, that will be more. What is remaining constant for me, volume। Then the next one, P by T versus your P, और एक ग्राफ P by T versus your temperature in Kelvin, बताओ इन दोनों के लिए कैसा ग्राफ आएगा, we get a graph straight line parallel to x axis ऐसा, बिकॉज इन सभी केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम अपने को कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना? टेल मी व्हाट विल बी दिस ग्राफ बेटा, दिस इज प्रेशर वर्सेस 1/t,
rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Done. अगर सेल्सियस में ले रहे हैं तो then this will be the graph. अगर this one is your pressure here right now and here this is the temperature in degree Celsius, we get a straight line like this. कितने डिग्री? मतलब -273 डिग्री सेल्सियस और यहाँ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर बेटा? Am I clear? Yes, sir. Next one is right now for Dalton's. इस पे ऑलरेडी एक बार पूछा गया क्वेश्चन बेटा. Dalton's partial pressure. As a chemistry student ये भी आप लोग को बहुत क्लियरली आना चाहिए. Dalton's partial pressure. In the bracket I can write mixture law. Mixture law. ये क्या होता है बेटा? Pressure exerted by mixture of non-reacting gases, यानी जो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, will be equal to sum of all the partial pressures. मान के चलो मेरे पास एक गैस है N1, इसका प्रेशर है P1, और एक गैस है N2, इसका प्रेशर है P2, और एक गैस है N3, जिसका है P3, और एक गैस है जिसके पास N4 moles है, and this one is P4. Go on like that. I'm having n number of moles, और इसका प्रेशर हो गया P. इन सभी को जब मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो ये पूरे एक जगह डाल के मैं इसको मिक्स कर रहा हूं. सो दिस विल बी पी नेट. तो पी टोटल कितना बनेगा? पी नेट लिखो या पी टोटल विल बी इक्वल टू योर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन अप टू Pn. सो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रेशर्स विल बी इक्वल टू नेट प्रेशर फॉर द. Am I clear?